Hello everyone. Hi Amir. Hi. Yes. Hi, ma'am, it's me, Afshin. Okay, you are Afshin. Okay. Just a moment. Let me share the screen. Have we done this question? No. Or we are No, done with ma'am. this one? No. No, we're not. Okay. Let's do it. From the top of 7 meter high building. Meanwhile, I am rubbing everything. Please read the question. Okay. Read and try understanding by yourself, or if possible, try making the figure by yourself. From the top of 7 meter high building, a 7 meter high building is there. From the top of 7 meter high building. So this is a building, this is the top, and this is the foot. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower. Angle of elevation तभी बनता है जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं. ओके तो अगर इस टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, आई मीन इस टॉप के ऊपर ही एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, मतलब the another, like the angle of elevation of top of the cable tower must be the taller, yes or no, or having more height than this building, yes or no, Yes, ma'am. Yes, ma'am. because it says from the top of, from means here only we will be getting the angle of elevation. Okay, so from the top of the 7 meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower we are having, and this is the top of the cable tower. Angle of elevation will get created like this. With the horizontal, of course, it's 60 degree. And this question is talking about angle of depression as well. Okay, so angle of depression, just like angle of elevation, angle of depression get created when we are looking down. Okay, suppose you are just sitting on the top of the building. Over here you are, and you are looking down on the floor, or maybe from the window you can see a car is coming. Okay, so this is the line of sight. Okay, and this is the horizontal line through your eye. You call it eye level, you call it horizontal line, whatever you call, this is the horizontal line. An angle of depression gets created with the line of sight and the horizontal line, just like this. This is the angle of depression. Angle of depression तभी create होता है जब हम नीचे की तरफ कुछ देखने की कोशिश करते हैं. Okay, if I am sitting over here, this is my eye level, and if I am trying to look something down on the floor, okay, maybe I have noticed something.
So that, or my pen fallen on the floor, so I'll see the pen, that this will be the line of sight going down and down and down. Okay, hence the name depression. Okay, going down and down and down, line of sight is going down. Okay, and the angle which is getting created with the horizontal line, that's called angle of depression. First tell me whether the angle of depression, this logic is clear or not. Clear, ma'am. If the logic is clear, then while working with angle of depression, we always prefer, okay, we draw the ground level like this. Like this, we draw the ground level. Like this. Okay. Maybe the person is sitting on the top floor, just looking from the window, but there must be ground. Okay. So black one is the ground level. Ground level. Okay. And the eye level, it must be parallel to the ground level. So if eye level is parallel to the ground level, then angle of depression, this black color is this black colored, okay, the black bold angle, that is the angle of depression. Rather than taking that angle, we will be taking this angle as an angle of depression. Why? Because upside down triangle, we don't want to work with upside down triangle. Okay, here we are getting a triangle like this, right angle triangle like this. Okay, if I'm saying angle of depression is 60 degree, then 60 degree over here, हमें ऐसा ऐसा एक ट्रायंगल मिल जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल. जब भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है, जो मैंने साइड में एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे ड्रॉ करा है. ऐसा ट्रायंगल हमें दिखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन की हेल्प से, जब भी हम एंगल मार्क करते हैं तो. ओके, हम कंफर्टेबल है इस तरीके के ट्रायंगल के साथ, हम ज्यादा कंफर्टेबल है. इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हमें ऐसा दिखता है, तो हम इसी पे वर्क कर सकते हैं. ओके, वहीं से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम डिसाइड कर सकते हैं, जो जो चीजें हम पहले कर रहे थे. ओके, हम सारे सेम कंसेप्ट इस ट्रायंगल पे यूज कर सकते हैं. बट क्योंकि हम ऐसे वाले ट्रायंगल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, ये जो मैंने PQR नीचे ड्रॉ करा है, दिस वन, द अदर ब्लैक वन, PQR, इस तरीके के ट्रायंगल के साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल है. इसलिए जब भी हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन हम मार्क करते हैं, तो ग्राउंड लेवल को पैरेलल एक ग्राउंड लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, और हम बोलते हैं क्योंकि ये जो ग्राउंड लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल जैसा हमें दिख रहा है, तो अगर वो एंगल 60 है, तो ये भी 60 होगा. क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और पैरेलल लाइन, ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी सेम. कैन यू सी? Yes, ma'am. कैन यू सी? Yes. और इसलिए हम रादर देन उस अपसाइड डाउन वाले ट्रायंगल पे फोकस करने की बजाय, हमारे इस वाले ट्रायंगल पे हम फोकस करते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, दिस वन. अदरवाइज हमारा आंसर वैरी नहीं करेगा. अगर हम उस ट्रायंगल को लेकर भी डेटा फाइंड करें, विल बी गेटिंग द सेम थिंग, बट रादर देन दैट वन वी फोकस ऑन दिस रेड कलर्ड वन, एंड वी से दैट अगर हमें, जस्ट अ सेकेंड, अगर हमें ये ब्लू कलर्ड साइड निकालना है, ओके, तो हम इस वाले साइड पे फोकस कर सकते हैं, दिस वन. ओके, यू कैन नेम इट AB, यू कैन नेम इट CD. तो अगर हमें AB निकालनी है, तो हम CD पे फोकस कर सकते हैं. ओके, एक्चुअली हमें कौन सा ट्रायंगल लेना था? ब्लू वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना था, बट उसके प्लेस पे हमने रेड वाला ट्रायंगल ले लिया. तो अगर हमें ब्लू वाले ट्रायंगल का AB साइड निकालना है क्वेश्चन में, या फिर यूज करना है, तो उसके प्लेस पे हम CD यूज कर सकते हैं, बिकॉज AB एंड CD आर इक्वल विथ ईच अदर. मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और या फिर अगर हमें ब्लू वाले ट्रायंगल के AC साइड पे फोकस करना था, या तो वो डेटा गिवन था, या फिर हमें फाइंड करना था, तो हम अपने रेड वाले ट्रायंगल के BD साइड के ऊपर फोकस कर लेंगे, क्योंकि AC और BD इट्स अ सेम थिंग. मेकिंग सेंस? Yeah. Yes, Ma'am. ma'am.
ओके, तो आज के बाद से एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हम क्रिएट करेंगे जरूर, जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा, लेकिन फिर उसे हम अपने जस्ट कन्वीनियंस के लिए, जैसे हमने रेड वाला ट्रायंगल लिया है, जस्ट पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज करके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज करा हमने, इस तरीके से ही हम ट्रायंगल ले लेंगे और फिर हमें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, लेट्स डू। बट बस हमें ये क्लैरिटी रहना चाहिए कि ये जैसे ही हम ब्लू के प्लेस पे रेड ट्रायंगल ले रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना है। ओके, यहाँ ए बी वहां सी डी के इक्वल है, ये क्लैरिटी हमें होना चाहिए। यहाँ ए सी वहां बी डी के इक्वल होगा, ये क्लैरिटी हमें रहना चाहिए। ओके, लेट्स वर्क विथ आवर क्वेश्चन। So in the question, it said that from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower is 60 degree. We have already marked 60 degree. And the angle of depression of its foot, its foot means which foot? Okay, cable tower's foot or maybe building's foot. So English में बोला जाता है its, जब इट्स यूज हुआ है तो इसके पहले जिसकी बात हो रही थी उसी के लिए इट्स यूज हुआ है, राइट? राइट। Yes, ma'am. ओके, अगर ही इज सच अ नाइस पर्सन, तो ही किसके लिए यूज हो रहा है, तो हम जस्ट उसके पहले वाले स्टेटमेंट में देखते हैं कि ही लाइक वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट, इफ देयर आर थ्री बॉयज, सपोज रोहन मोहन सोहन, ओके, एंड ऑल ऑफ सडन इन बिटवीन द स्टोरी ही इज देयर, तो हम क्या चेक करते हैं, उसके पहले वाले स्टेटमेंट में किसकी बात हो रही थी उसी के लिए ही यूज हुआ होगा, राइट? Yes, ma'am. राइट, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। अगर हमें ये जो इट्स है, इट्स, इसे देखकर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये इट्स किसके लिए आ गया, तो हम इसके जस्ट पहले जाके देखेंगे कि किसकी बात हो रही थी। और when we will shift in a backward direction slowly, then you will realize that it was, okay, cable tower was mentioned, yes or no? Yes, ma'am. Right, so it's must have been used for this cable tower. Okay, now I am summarizing. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower and its foot. It means cable tower's foot. It's 45 degree. तो ये जो बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग के बाद ध्यान से देखो कॉमा है ना? फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग के बाद कॉमा है, इस ये कॉमा ये बता रहा है कि ये जो फ्रॉम द टॉप है, यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. ओके, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में लिखता है 5 years लेटर। अब जितने भी पर्सन्स हैं, जितनी भी स्टोरी है, अब वो 5 year बाद की सब कुछ दिखाना स्टार्ट हो जाता है, राइट? यहाँ भी वही हो रहा है, कॉमा में, इंग्लिश में कॉमा जब दे देते हैं, मतलब फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। ओके, तो ध्यान से देखो, केबल टावर के फुट का, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट को ज्वाइन करेंगे तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हम हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के साथ क्रिएट होता है। हॉरिजेंटल लाइन ऑलरेडी यहाँ पे हमने ड्रॉ करा है, बार बार हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ नहीं करते। ओके, तो यहीं पे ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है जिसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहे हैं, दैट इज 45 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन, एंड वी आर डन। अब क्योंकि हम इस वाले ट्रायंगल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ये जो हमने 45 डिग्री मार्क करा है और यहाँ हम 90 बताने वाले हैं, इस ट्रायंगल के साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो हम पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज करके बोल सकते हैं इफ दैट इज 45 दिस विल बी 45। मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Okay, and rather than focusing on this upside down triangle, now we can focus on this triangle where this angle is 45 and of course this is 90.
and this is 7. Okay, is it clear to all of you? Yeah. Yes, ma'am. Now the next question is how many right angle triangle we are having. So you can clearly see one of the right angle triangle is containing that 60-degree. Okay, here 90-degree is there because you have drawn a horizontal line parallel to the ground level. Okay, so yes, that was 90-degree. And here also 90-degree you are having because building must be standing straight, making 90-degree with the ground. So can you see two right angle triangle? One of them is EDC. Here 90, here 45. Actually ये triangle हमें angle of depression की help से मिला है. And another right angle triangle is this one. ABE. Making sense? Yes, ma'am. Okay. First of all, we draw the figure. Then we identify the triangle. So we have drawn the figure. Now we identified the triangle as well. That here. Wait. Just a moment. Yeah. So we were discussing that first of all we have to make the triangle and then we have to decide how many right angle triangle we are having. Always you can see the angles 60-degree, 45-degree. You will be getting two triangle over here and we can see clearly two triangle. We have to find the height of the tower. See carefully, it's talking about the cable tower because in this question you were having one building and one cable tower. So basically, it's if it says the height of the tower, it is talking about the height of the cable tower. That means complete length A to C. Now we know the distance, the height of okay from D to E, the height of the building was given as a 7 meter, right? Okay, AB, do we know AB? No. Okay, let's work on these triangles first and let's see what can be found. One thing you have to notice over here in previous questions, how I used to say that which two side you will be using. First, you have to see carefully from the question, from your figure. Okay, that which two side you are going to take. Accordingly, you will be deciding the trigonometric ratio. So here again, I will be repeating that definitely you will be taking DE in the first triangle, the first one, DE. And CD. Why CD? Because here CD and there BE is the same thing. Can you see that? Yeah. Yes, ma'am. Yes, Amir, are you getting it? Yes, ma'am. Okay, CD and BE is the same thing.
So that's why CD we will be using, because after this step, maybe we have to solve this equation by using the method of substitution and all. So if any side is same in both the triangle, definitely we are going to use that. Now I'll be writing the trigonometric ratio. Let's write it. Tan 45 is equals to opposite over adjacent. Okay, in each and every question, do we have to use tan only? No. Okay, we have decided by looking at the sides, then only I am using tan. So tan 45 is 1, DE was given as a 7, and CD I have taken intentionally. Okay, from here we are getting CD as a 7 meter. Is it clear? Yes, ma'am. Now we are going to take the other triangle. Of course, we will be using this AB. Why? Because we have to find the height of the tower. ओके दिस ये जो ए बी है ये पूरे टावर का तो हाइट नहीं है, पूरा टावर तो ए से लेकर सी तक है, बट एटलीस्ट अभी के लिए हम ए बी कैलकुलेट तो कर पा रहे हैं. ओके तो ए बी हम यूज करेंगे और बीई हमने ऑलरेडी देखा है, सी डी बीई एक ही बात है, तो बीई हम जरूर यूज करेंगे. और अगर हमें इन दोनों साइड को यूज करना है तो टैन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ले सकते हैं, दैट इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. Tan 60 is root 3. Opposite AB. AB we don't know. And BE. अभी अभी हमने CD फाइंड करा है 7. We will say BE and CD is the same thing. Yes or no? Right? Yes, ma'am. Yes. Okay, तो BE के प्लेस पे हम 7 यूज कर सकते हैं. And from here we are going to get AB as a 7 root 3. We are done with AB. अब हमें सिर्फ इस टावर की हाइट फाइंड करनी है फ्रॉम A to C. इनिशियली हमने ये क्लैरिटी रख के हम प्रोसीड हमने करा है कि ये जो BC है और ये जो DE है ये दोनों सेम है आपस में. ओके क्योंकि पैरेलल लाइन की वजह से रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है, पैरेलल लाइन एंड 90 डिग्री की वजह से रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है. तो जो BC है वही DE है. तो अगर DE 7 मीटर गिवन था तो हम BC को भी 7 मीटर ले सकते हैं, हाँ या ना? Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके हमें हमें पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी है, AC की हाइट फाइंड करनी है. तो ऑलरेडी हमने AB निकाल रखा है, दैट इज 7 रूट 3. और BC अभी अभी हमने लिखा है 7. इन दोनों को ऐड करके हमें AC मिल गया. यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट वी कैन टेक कॉमन फैक्टर 7 एंड रूट 3 प्लस 1 इन द ब्रैकेट. ऐसे क्वेश्चंस में जब भी बोला जाए दैट टेक रूट 3 एज अ 3.14, देन वी आर सपोज टू डू द कैलकुलेशन फर्दर, अदरवाइज वी विल लीव आवर आंसर एज इट इज. क्लियरली हम देख पा रहे हैं हमारे आंसर में डेनोमिनेटर में रूट एंड ऑल कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए हम आंसर को एज इट इज लीव कर रहे हैं. मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the approach is really simple. 80% task is to draw the figure properly. Okay, there is a building, there is a tower. From the top of the building, angle of elevation, okay, off the top of the cable tower and its foot, okay, angle of depression of its foot, it's 45 degrees. So yes, we have just understood the statement really well, and then only we are solving the question. Anyone having any confusion so far? No, No, ma'am. ma'am. Let's do the next one. Just a second. Question number 13. As observed from the top of the 75-meter high lighthouse, okay, from the sea level, the angle of depression of two ships. Let's see what the question says. Meanwhile, I am rubbing it. Please read the question.
Let's do. As observed from top of 75-meter high lighthouse. So 75-meter high lighthouse is there. If you are thinking what is lighthouse, do you understand what is lighthouse? Yes, ma'am. Yeah. Everyone, do you know what is lighthouse? Yes, ma'am. Okay, so 75-meter high lighthouse we are having. Okay, this 75-meter high from the sea level. Okay, fine. The angle of depression of two ships are this and that. So there is a ship. Okay, if one ship is exactly behind the other, so maybe the other ship is like this. Okay, two ships are there. The angle of depression as observed from the top. Of course, एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं. नेम ही डिप्रेशन है. ओके, तो जब हम यहाँ टॉप से नीचे की तरफ देख रहे हैं, लाइट हाउस के टॉप से, ओके, वी कैन सी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट शिप. एंगल ऑफ डिप्रेशन हम हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के साथ ही क्रिएट होता है. हॉरिजेंटल लाइन, तो जो ये जो टॉप है यहाँ से होते हुए हमें एक हॉरिजेंटल लाइन खुद से ड्रॉ करना ही होगा, कीपिंग द अजम्पशन दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल. मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, आई मीन डिप्रेशन. ओके, एक एंगल तो ये बन रहा है और दूसरे शिप के साथ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है. लेट मी मेक इट फ्रॉम द टॉप. ओके, दूसरे शिप के साथ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. तो और एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें? बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करा है. इसी हॉरिजॉन्टल के साथ बार बार ग्राउंड लेवल तो हम ड्रॉ नहीं करते, राइट? तो इसी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरे शिप का. एक एक एंगल, ध्यान से देखो, पहले वाले शिप का एंगल ये पर्पल वाला एंगल है और दूसरे वाले शिप का एंगल ये ग्रीन वाला एंगल है. ऐसे क्वेश्चंस में जब मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ तो बाद में स्टूडेंट आके जरूर मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पता कैसे लगेगा विच वन इज 30 एंड विच वन इज 45. तो क्या हमें दिख रहा है कि जो बिगर एंगल है उसे हम 45 बोलेंगे और जो स्मॉलर है उसे 30 बोलेंगे? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन में हमें लिख के नहीं बताया जाता है दैट द फर्स्ट शिप, okay, or maybe the second ship, this angle, first ship, that angle. You can clearly see both the angles are given just like one after another. Okay, हमें पता कैसे लगेगा? Just we'll be taking by looking at the figure. I will mark the bigger angle as a 45 and the smaller angle as a 30 degree. So I will say this green one must be 30 degree and this purple one must be 45 degree. Clear? Yes, ma'am. ओके, नाउ जस्ट हम अपने कन्वीनियंस के लिए, ओके, ऐसे अपसाइड डाउन वाले ट्रायंगल के ऊपर हमें वर्क करना हम थोड़े कंफर्टेबल नहीं है. जस्ट if the angle is like this and the triangle looks like this, okay, rather than that we take the proper triangle the way we have done all the questions from angle of elevation. So हम खुद से एक ग्राउंड लेवल ड्रॉ कर लेते हैं. ग्राउंड लेवल, यहाँ पे हम सी लेवल ड्रॉ कर लेंगे, द स्ट्रेट लाइन. Okay, just like this. And you will say if that is 45, then this will also be 45. Making sense? Yes, ma'am. And if that is 30, then this will also be 30, right? By alternate interior angle, parallel line, alternate interior angle. Making sense? Yes, ma'am. Yes, everyone getting it? Afshin, are you getting? Yes, ma'am. Yes, Abdullah, are you understanding? Okay, now rather than drawing the complete figure like this,
We can focus on this figure. Again, I'll be asking how many right angle triangle you can see. Of course, two. Okay, one is ABC. Wait, one is ABC, another is ABD, right? Right. Yes, ma'am. Okay, what we have to find? We have to find the distance between two ship. That means CD we have to find, right? Yes, ma'am. Okay, one of the triangle is ABC, another triangle is ABD. In ABC triangle, we will be taking tan 30. Again tan? Yes. Okay, because we have to find the distance between two ship C and D. So we will be using this, okay, adjacent side. And AB is common in both the triangles. So of course we will be using that. And yeah, AB was given also 75-meter high lighthouse. So we will be using that. So tan 30 is equals to AB by BC. That means 1 by root 3 is equals to AB was given as a 75 and BC we don't know. Okay, from here we'll be able to take out the BC, and in the next triangle ABD we can write tan 45 is equals to this AB. Wait, no. Tan 45 is equals to AB by BD. Okay, tan 45 1. AB we know 75 and BD we don't know. From here directly we are getting BD is 75 meter, right? Yes, ma'am. Right. And from there we are getting, from the first condition we are getting BC is 75 root 3, right? Yeah, yes, ma'am. Okay, one is 75 root 3, another is just 75. Now see, mark it in the figure. Your B to C. From B to C complete is, from B to C complete distance is 75 root 3. Wait, no. I'm not marking, just see in the figure. From B to C completely it is 75 root 3, and from B to D it is 75, and we have to find CD. How we will find CD? Yes, the total distance you already know. It's 75 root 3. And this much distance just now you have found. BD is just 75. So can I say from the total, if I will subtract the black colored part, if I will cut it out and delete it, we will be end up getting CD. Yes, ma'am. Is it making sense? That BC minus BC minus BD is CD. Yes or no? Yeah. BC minus BD, that is CD. CD we have to find the distance between two ships. CD we have to find. Okay, BC is 75 root 3 and BD is 75. Don't get confused. Okay, that which one is bigger, which one is a smaller. Of course 75 root 3 is bigger and 75 is a smaller, right? Yes, ma'am. Okay, we are done. Again, I would say that take 75 common and write the answer like this. And yeah, of course, write the meter, the unit. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so this is how we'll be doing the questions from angle of depression. Let's see a few more questions.
Question number 14, already figure is given. Okay, and if already figure is given, then the question solving part, okay, this must be easier. Let's see whether it is easy or not. Meanwhile, please read the question. Am I leaving any question? Just a second, no, let me check. No. Let's do. A 1.2-meter tall girl spot a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. So this is the first time the girl is observing the balloon. Okay, here is the balloon. As you can clearly see, here is the balloon. Okay, from here, the girl is here, standing over here, the purple one. Okay, and is observing the balloon for the first time. Okay, the height of the girl is given as a 1.2 meter. We must not miss this data. Okay, here the height of the girl is given as a 1.2 meter. And we always draw the eye level like this. And then only we think about taking the angle of elevation. Yes or no? Right? Yes, ma'am. Right? Okay, so a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line. The balloon is moving in the horizontal line. That means always it is at the same distance from the ground. Okay, now the balloon is here. The height from the ground is same, even if the balloon is moving. Making sense? Making sense? So, a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter. Here also the height is 88.2 meter. The balloon's height is 88.2 meter. Okay, and the balloon is moving in the horizontal line. सी केयरफुली, ध्यान से देखो बलून कैसे मूव कर रहा है विंड के साथ, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, यहाँ वहां ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, देखो। ओके, यहाँ भी हाइट 88.2 है, वहां भी हाइट 88.2 ही है। ओके, फ्रॉम द ग्राउंड, और ये जो हाइट है ये ग्राउंड से हाइट है, बलून का कहाँ से हाइट है, ग्राउंड से। ओके, the angle of elevation, everything is given. After some time the angle of elevation reduces to 30. Find the distance traveled by the balloon. हमें डिस्टेंस निकालना है, इस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। ओके, यू कैन मार्क इट एज अ ए, यू कैन मार्क इट एज अ बी, यू कैन मार्क इट एज अ सी, यू कैन मार्क इट एज अ डी, यू कैन मार्क इट एज अ ई। नाउ ध्यान से हमें राइट एंगल ट्रायंगल पहचानना है। यहाँ एक बात का कंफ्यूजन हो सकता है कि इस गर्ल की हाइट 1.2 मीटर टॉल है। ये जो गर्ल है इसकी हाइट ऑलरेडी 1.2 मीटर टॉल है, और जो बलून की हाइट है वो ग्राउंड से 88.2 है। तो जब हम अपना ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई लेवल ड्रॉ किया गया है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ही आई लेवल ड्रॉ किया गया है। कैन यू सी दिस पिंक कलर्ड लाइन? कैन यू सी दिस पिंक कलर्ड लाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आई लेवल है, ग्राउंड तो बीई है, आई लेवल है ये पिंक कलर लाइन। Okay, because the black teeny tiny which I have done bold, that is the girl. Okay, तो गर्ल के आई से होता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी फिगर में ड्रॉन है।
इतना ये स्मॉलर हाइट यहाँ पे दिखाया गया है कि उसे नेग्लेक्ट मत कर देना. ओके, बी केयरफुल दैट हाइट ऑफ द गर्ल वाज 1.2 मीटर and the balloon is at 88.2 meter from the ground. So if you will take this right angle triangle, where you will take the angle as a 60 degree, of course. Okay, the complete was 60 degree and the smaller one is 30 degree. So if you will take this right angle triangle, be careful this height over here. I'm talking about, you call it, I have marked already A, B, C, D, E. Suppose this is F. So if you are talking about the height, okay, this DF, can you see the triangle F, G? Can you see the triangle DFG? Can you see? Yes, ma'am. Okay, here the angle is 60 degree. Don't get confused. That is not 30, that is 60 degree. Okay, 30 is for another triangle. In this blue color triangle, I'm highlighting the another triangle as well. Right angle triangle. These are two right angle triangle. Is it clear to everyone? Yes, Is ma'am, it it is. clear? Okay, I'm not explaining the figure, already drawn figure. Yes. Okay, the data I was explaining how the data is given. So one of the triangle is this DFG and another triangle is, you can mark it any name over here, H. So another triangle is AHG. Okay, AHG. Two triangles you are having. Now in this two triangle, what are the data you are having in your hand? Okay, so be careful. DF, this DF is the complete, okay, the distance of balloon from the ground, 88.2, minus the girl's height, that is 1.2. Are you understanding, everyone? Yes or no? Yeah, ma'am. Okay, why we are doing the subtraction? Is it making sense? 2 minus 2 is 0, 88 minus 1 is 87. So actually this DF is 87 meter, not 88.2. क्योंकि 88.2 तो ग्राउंड से डिस्टेंस था. ओके, हम ग्राउंड से ले ही नहीं रहे अपने ट्रायंगल को, तो हम ग्राउंड से डिस्टेंस कैसे ले सकते हैं? राइट, राइट. Ma'am, So can our you triangle, repeat? okay, I am saying the girl's height is 1.2 meter tall girl is there. Okay, and if I will draw the figure by myself, then from the eye, I'll draw the eye level. Okay, and the balloon's height from the ground is 88.2. From the ground balloon's height, and you are just taking this triangle, the upper triangle, this triangle. So why you will take the complete height 88.2? Yes or no? Yes, ma'am. We will be taking 88.2 minus 1.2. Clear? Yeah. ओके, ये जो फिगर है ना यहाँ पे बहुत स्मॉलर स्मॉलर एकदम टिनी टाइनी हमें शो करा गया है, इसीलिए हमें समझ में कंफ्यूजन हो सकता है. If you will draw it by yourself, girl's height as a 1.2 and the complete distance from the ground, the balloon's height is 88.2, you will be able to see, okay, that you are taking only the upper part of the triangle. That's why 88.2 minus 1.2, 87. So yeah, in DFC triangle, in DFG triangle, this is 87. Okay. Do we know GF? No. What we have to find, the distance traveled by the balloon. बलून कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? पहले बलून डी पे था, फिर बलून ए पे है, राइट? और हॉरिजॉन्टली मूव किया है बिना हाइट चेंज किए, राइट? तो अगर हमें डी ए निकालना है तो हम एच एच एफ पे फोकस कर सकते हैं. एच एफ
Can you see that? Can you see? If we want to find DA, then we can focus on FH. FH. Yes or no? Oh, wait, ma'am. If we want to find DA, Yeah. then we can focus on FH because both are same, right? Oh, yeah. Yes, ma'am. Okay, why? Because the balloon was moving horizontally straight. It is written in the question. Okay, that's why if we have to find what is the distance balloon has covered, then we can say it's same as a HF, which we can find with the help of our triangle, right? Yes, ma'am, we can. Okay, so we will be using, in blue color triangle, we will be using GF side. Okay, so Okay, ma'am. here 60 degrees there. Again, we will be using tan 60. But yeah, all the approach you have to use, that how you will be deciding the trigonometric ratio and all. Opposite over adjacent, so opposite is DF and adjacent is GF. From here, you will be able to find GF. Okay, now you will be taking triangle AHG, and in triangle AHG, just a moment, let me show it. Your AH is again 87, not 88.2. Okay, and here angle is 30 degree. So you will be using the same. Tan 30 is equals to opposite over adjacent. That is GH. Okay, tan 30 is 1 by root 3. AH is 87 by GH. And from here you will be able to take out the value for GH. Okay, GH, GF both you are having. और अब फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमें एच एफ मिल जाएगा. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Okay, we are done. Okay, please note down the hint. I am keeping this much over here. You have to finish it by yourself, okay? Please note it down. I am keeping this much over here, and after this one we'll be taking in the next class. Okay, ma'am. I'll note it down. Okay, so yeah, keeping it this much. Thank you, Afshin. Yes, take care of yourself. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Yeah, bye. Take care. Thank you.